Open your grammar book at page number 181, report writing. And regarding the comprehension, you will send me the images of answers. This time I am not going to tell you that how you have to solve it. I want answers, and you, all of you, send the images at my personal number that ma'am, we have completed this passage. Today only I want all the images of solved comprehension. Is it clear? So now I'm going to explain you about the report writing section. We are going to start with it today. So we have started with the report writing today. It is Monday. Write down the date also. I'm going to explain you, and then tomorrow we will write one report. What is the report? Now when there are two types of reports. One is the newspaper report related to the newspaper, and the other is the writing a report on some event or a function, anything else. Okay? There are two types. Now a report is a factual description. ये क्या होती है बच्चे? जो हमने फैक्ट में देखा होता है ना, हम उसको फैक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. सो इट्स अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और एन अकाउंट ऑफ एन इवेंट, और some event you have attended, so you have to describe that event. It is of two types: factual description or an account of an event. Reports are usually of two kinds. Reports क्या हैं? Two kinds की होती हैं. Report meant for the newspaper is basically a news story of an event, incident, investigation of an issue or a problem. So if it is a newspaper related report, so it can be about news of an event, of an incident, investigation भी हो सकती है of an issue or a problem. It may also be an objective analysis or evaluation of something. Like from the last few months, you might have heard on your news channels, mostly they were covering the Sushant suicide story. So what was it? Sushant Rajput, the famous actor, who committed suicide in, I think, in the month of May or June. So all the TV shows, all the news channels were covering his suicide story, right? So that is like a report. That was in a verbal form, and when you give in a written part, you send that written part into the newspapers. Is it clear? So when you cover some incident or an issue or a problem in a written form, that is a report. Okay? But when the news channels are flashing it, verbally they are giving you the report of each and everything, that what happened on that day or on the previous day, what he drank, who was found there. So all these facts they jotted down and they just tell you verbally as well as in the written form. In newspapers and magazines we get in the written form. So it may be the objective analysis or the evaluation of something. Now second type of report is a report meant for school magazine, usually in brief account of an activity or a function held in a school. जो दूसरी रिपोर्ट होती है बच्चे, वो हमारी स्कूल से रिलेटेड हो सकती है या इंस्टीट्यूशन में, आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, they have organized some activity or a function and you have observed that. Fine. So you have to give the factual description of that event happened in your school or your institution or anything else. So these are two types of details. Now in general the important elements क्या होते हैं हमारे रिपोर्ट के? एक तो हमारी हेडिंग जो है ना, मेन होती है हेडिंग. इट शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट, टू द पॉइंट होनी चाहिए. नेम ऑफ द रिपोर्टर, आपका नेम भी होना चाहिए जिसने रिपोर्ट की. एंड द थर्ड इज डिटेल्स ऑफ द इवेंट. फर्स्ट आपकी हेडिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी सूटेबल, अप टू द मार्क. देन नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड द डिटेल्स ऑफ द इवेंट ऑल्सो. तो आपने थर्ड में उसके बाद आपने अपना नाम लिखने के बाद यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ दैट फंक्शन और द इवेंट और द इंसिडेंट. नाउ लिस्ट ऑफ वैल्यू पॉइंट्स.
हमारे क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए रिपोर्ट में। एक अच्छी रिपोर्ट क्या क्या इंक्लूड करती है? इट शुड इंक्लूड व्हाट हैपेंड। सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका यही होना चाहिए, क्या हुआ। व्हेन, वेयर एंड हाउ, क्लियर। पीपल, व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड, हाउ मेनी पीपल वर देयर, क्या क्या व्हीकल्स थे वहाँ पे जो इन्वॉल्व थे। अगर लॉस ऑफ लाइफ हुआ है कोई, हाउ मच प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, डिटेल्स ऑफ द रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशंस, द सीन ऑफ द एक्सीडेंट, फाइन। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ है। डिटेल्स ऑफ द कैजुअलिटीज, डेड हैं कि हाउ मेनी आर डेड, इंजर्ड और हॉस्पिटलाइज्ड, रेफरेंस टू द ऑर्डर्स ऑफ इंक्वायरी बाय द गवर्नमेंट, देन grants to the families of the killed or injured, punch a warning, reminder or a comment on the negligence of the guilty, and at the last you have to, in addition you have to give your comment. You have to either, if you feel that there is some negligence or something like that, if you feel, so you can give punch a warning, you can remind them, or you can give your comment from your side if there is some negligence of the guilty, including the government department, or a recommendation on what needs to be done. Means अगर आपको ऐसा लगता है कि उस इंसिडेंट में या उस एक्सीडेंट में कुछ ऐसी नेग्लिजेंस है या कोई गिल्टी है, तो आपको वहाँ पे आप अपना लास्ट में ऐड कर सकते हैं वार्निंग भी, या रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं, या आप अपना कोई कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्ट्स होने चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के। ये आपके इंसिडेंट या एक्सीडेंट के हैं। नाउ वी कम टू द स्कूल इवेंट और अ फंक्शन। नाउ नेम एंड नेचर ऑफ द इवेंट। सबसे पहले आप नेम एंड नेचर ऑफ द इवेंट लिखेंगे। ठीक है, आपने नेम लिखना है और आपने इवेंट लिखनी है कौन सी है। उसके बाद आप लिखेंगे ओकेजन, किस चीज़ पे हुई है वो इवेंट, क्या हुआ है। ठीक है ना, वो उसके बारे में आप लिखेंगे। डेट, टाइम एंड प्लेस लिखेंगे, कब हुई थी, टाइम लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे। फिर क्या क्या चीफ गेस्ट कौन था वहाँ पे, हु वॉज द चीफ गेस्ट, हु वॉज द गेस्ट ऑफ द ऑनर, यू विल मेंशन इट इन द फर्स्ट पैराग्राफ। देन मेन पॉइंट ऑफ द चीफ गेस्ट मैसेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चीफ गेस्ट ने क्या बोला, व्हाट मैसेज ही गेव, सो यू हैव टू मेंशन दिस ऑल। एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट व्हाट हैपेंड। आपने पूरी डिटेल देनी है उस इवेंट की, क्या क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर डांस था, सो यू विल सीरियल वाइज यू विल राइट डाउन sequentially that dance was there, recital was there, prize distribution, etc., etc., or a solo song, group song, then speech by so and so. Comment on the quality of the program. Last में फिर आप जब आप क्लोजिंग के पास हैं बिल्कुल, when you are nearing to close that, you will comment that whether you liked it or not and what was the quality of the program. If you want to give some, if you want some that there can be some improvements, so you can give your comment also. Then vote of thanks. Last में फिर हम thanks करेंगे the person who delivered it. ठीक है? So these are the important points. You start writing in your notebooks, report writing. Write down the definition. Then you write the journal important elements of the report here like this. Then you list of value points, and पहले आप इसके लिखेंगे इंसिडेंट और एक्सीडेंट के वैल्यू पॉइंट्स. देन यू विल राइट द स्कूल इवेंट और फंक्शन कि आपने क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चे. अगर आप इनको सोच के, इनको आप अपने माइंड में रख के लिखेंगे ना रिपोर्ट, तो आपकी एकदम फर्स्ट क्लास लिखी जाएगी. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ व्हाट इज द लेआउट. हमने अब लेआउट के बारे में पता करना है कि क्या लेआउट होता है. न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे पहले हम बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. वन थिंग आई वांट टू टेल यू बच्चे, दैट स्टूडेंट्स कीप ऑन डिस्टर्बिंग व्हाइल आई एम टेकिंग क्लास. दे कीप ऑन कॉलिंग मी. So it's a request to all the students that they should understand that teacher is not all time available. If she is not accepting the call, that means she is busy in doing some work.
So you people should also think that teachers are busy recording lectures for you, and students are bothering me again and again, ringing me. And you should at least think of that. If teacher is not accepting the call, that means she is busy. Either she is taking the class or doing some work. So you should not bother the teachers like that. Okay, so be careful before calling the teacher. You should see the time. Some students call me at night also, or in the early morning also. You should at least consider that teachers are also human beings and they also are busy doing some work. So heading and the title. First and the foremost thing is that we have to take care of the heading or the title. It should be very brief and catchy. Description of what the report is about. You should give some catchy description. Brief means बहुत ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं देना है. Byline contains the reporter's name. इसमें आप अपना नाम देंगे और अपनी डेजिग्नेशन बताएंगे किस पोस्ट पे हैं. Then you will tell the place and the date of that incident. Clear? पहले आपने तीनों चीजें जरूर लिखनी है, बिकॉज जो इवेल्युएशन होगा बच्चे इन्हीं के पॉइंट्स को, वैल्यू पॉइंट्स को देख के ही होगा इवेल्युएशन. Then comes the opening paragraph. Opening paragraph means the introduction, a brief mention of what happened, where and how, and most prominent consequences, facts along with the day, date, time when it took place. Then in the opening paragraph, what you have to write? You have to first of all mention what incident happened, place, time of that incident, and main वहाँ पे क्या क्या important consequences रही. Prominent means important consequences, results, and facts along the day. क्या क्या वहाँ के facts थे, day, date, time when it took place. तो आपको introduction यही देनी है कि yes, so and so incident happened at this place on this date, and this was the result. आपने consequences भी बताने हैं, and on the day, date, and time when it took place. It will just should be in the introduction part. Then in the second paragraph you will start writing, not second paragraph, later on. We don't make paragraphs in this. We just write it in a one big paragraph. Then you will start writing in detail. This section includes a eyewitness. इसमें आपने eyewitness के बारे में बताना है कि उसने क्या क्या देखा. You will talk to them. You will converse throughout the public, the people standing there, and you will find out that if there is any eyewitness accounts, वो अपना बताएंगे कि what happened at what, वो उन सब के आप quotes लेंगे, means in their own language. You will record their quotes. In case of accidents, loss of life or property is listed, cause of accident is concluded, and the police action and rescue operations and damage control exercises are detailed. तो एक्सीडेंट हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी कितनी, प्रॉपर्टी का क्या लॉस हुआ है, एक्सीडेंट क्यों हुआ, कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये सब आपने बातें उसमें डालनी है. आपने ये भी लिखना है कि पुलिस ने क्या एक्शन, व्हाट एक्शन द पुलिस टुक, व्हाट रेस्क्यू ऑपरेशंस वर ऑपरेटेड, हाउ मच डैमेज इट has happened there, and you have to give in detail. Compensation and help announced by the government, if any, and are also included. That should be in the concluding part, in the concluding lines. A journal comment on the incident or events, warning and appeal for concluding remand. So conclusion में आपके या तो अपना एक journal comment दे सकते हैं आपको, whether वो मतलब उसमें आपको कोई कमी लग रही है या कोई आप चाहते हैं कि improvement हो या ऐसा होना चाहिए था. So you can add your comment in the end of that incident. You can give it in the form of a warning or an appeal or a concluding remark also. ठीक है, it should be the concluding remark. Now you go through this sample report newspaper. You are Arjun Srivastav, working as a newspaper reporter for the Times of India. You have made notes for the news item. You are so and so. You are given the name and you will address yourself like this only. Read these notes and write a report in about 150 words.
ऑब्जर्व दैट नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडेड. इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं ऐड करनी है. स्कूल मैटाडोर 20 स्टूडेंट्स. आफ्टर स्कूल ferried home 13-year-old Vineet sitting in the front notices smoke emanating from the bonnet. Driver stops van, dark fumes, immense flames follow, spread towards rear. Vineet and driver jump, other students trapped, physically pulls fellow students, quick thinking, saves life, van catches fire. Now these are the notes. Notes will be given to you if you have to write a newspaper report. So you will start writing. कैची हमने सबसे पहले बहुत हमारा जो है ना हेडलाइन वो हमारा बहुत कैची होना चाहिए, ठीक है ना. तो इसमें क्या किसने नोटिस किया था, हमने ये ध्यान देना है कि जो विनीत था वो एकदम फ्रंट में बैठा था, है ना. उसने नोटिस किया स्मोक निकल रही है, तो हमने अपना बड़ा कैची सा हेडिंग देना है. 13-year-old रेस्क्यूज फ्रेंड्स फ्रॉम अ बर्निंग वैन. यहाँ बताया गया ना 13-year-old एंड ही हैज noticed. So we will make a very catchy line. 13-year-old rescues friends from a burning van. Now then we will write the name Arjun Srivastav. It is already given in the question. We will write the place and the date. Clear? Then all that remained of the school van that was ferrying. All that remained of the school van that was ferrying 20 students home from SK Memorial Public School is a burnt out frame. They have started जो भी उन वहाँ पे रिमेन्स बचे हैं, तो उन्होंने स्टार्ट ही लाइन ऐसे की है कि जो जो रिमेन्स बचे हैं, क्या बचा है. ऑल दैट रिमेन्ड ऑफ द स्कूल वैन दैट वाज फेरिंग 20 स्टूडेंट्स. 20 स्टूडेंट्स थे उसमें. एवरीथिंग इज रिटन हियर एंड यू जस्ट हैव टू फॉर्म इट इन द सेंटेंस. फ्रॉम द स्कूल इज बर्nt आउट फ्रेम. तो क्या बचा है उस वैन का, सिर्फ बर्nt आउट फ्रेम. 13-year-old Vineet sitting next to the driver noticed smoke emanating from the bonnet, informed the driver about it. When the driver stopped the van to open the bonnet, a cloud of dark fumes emanated from there. Everything is written here, you just have to form the sentences. These were followed by the immense flames which spread towards the rear of the van. Rear means backside. With a quick thinking, Vineet jumped out of the smoky van and with the help of the driver, they physically pulled out his fellow students who were trapped in the van, which had by now become a burning inferno. Means काफ़ी ज़्यादा आग वहाँ पे लग चुकी थी. The school principals should be alarmed by this incident and issue a notice to the commuting vans and other vehicles carrying children to school to get evidences of vehicle maintenance from service stations at a regular intervals. So like this you have to form the detail. If you have to write the newspaper report, so you will be given the sample, you will be given the clues, and from this clues you have to form a paragraph like this. So go through all the reports today and tomorrow we will write one report. Clear to all of you? I hope it is clear. So all of you start doing your work.